Hello viewers, welcome in this important and amazing video that is related with the Windows 11 features. Viewers, आपको इस वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम Windows 11 से रिलेटेड जो उसके न्यू फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली Microsoft released the Windows 11 for the public on the 5th October. 5 अक्टूबर 2021 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को रिलीज किया पब्लिक के लिए। Basically, this is the layout of the Windows 11. Here you see the new layout of the Windows 11. How can I make a bootable USB flash drive for Windows 11? किस तरह आप bootable USB बना सकते हैं Windows 11 के लिए? Yes, you can build. You can create your very own bootable USB flash drive using the updated version of the media creation tool. आप मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू bootable USB बना सकते हैं. And here you see the setup of the bootable process. See here the wizard. As here you can use a USB flash to create a bootable USB, or you may use the ISO file for the setup of Windows 11. How can I download the Windows 11 ISO file? You can download the Windows 11 ISO file from the official website of the Microsoft. Here you see the look of the website. You can download from here 64-bit versions of Windows 11. So remember that Windows 11 is not available in the 32-bit version. माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां से विंडोज 11 का 64-बिट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. Why is not Windows 11 available on the computer, especially on my computer? If you don't have received the notification to upgrade your computer to Windows 11, it's likely because a new version still is ready for your device or computer does not meet the minimum requirements. It means that there are something that is not available in your computer, so that you cannot upgrade or install the Windows 11. Windows 11 की minimum requirements हैं. अगर आप के सिस्टम में वो अवेलेबल नहीं है या वो कम है तो आपको प्रॉब्लम होगी विंडोज की इंस्टॉलेशन में. How to update Windows 11? You may go in the setting options and then click on the Windows update and check the updates and then download and install the updates for Windows 11. Why is my computer running out of space after the Windows 11 upgrade? If you recently upgrade your computer to Windows 11, you will probably notice that installation is taking a big chunk of space. अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं Windows 11 को तो इससे ये होता है कि आपकी स्पेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो सेटअप प्रोसेस है वो प्रीवियस इंस्टॉलेशन की कॉपी भी अपने पास रखता है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं होती. So the setup process that create a copy of previous installation in case something goes wrong during the installation and the system has to roll back. See here the detail of the previous installation and its storage capacity. Can I reset the Windows 11 installation? Yes, absolutely. You can reset your Windows installation from the Windows 10 technologies by using the reset this PC feature.
आप रीसेट दिस पीसी फीचर इस्तेमाल करके विंडोज 11 को रीसेट कर सकते हैं विंडोज 10 की टेक्नोलॉजी की मदद से. How can you use a reset PC option? Go in the setting, then click on the system. Here click on the recovery option. Here you see this option reset this PC. Reset PC पे आप क्लिक करें तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा. What's new with the start menu on the Windows 11? Basically, it is a very simple app launcher. You may see here as a rounded corner and transparent materials. Very amazing. बहुत ही beautiful, खूबसूरत layout Windows 11 का. Very beautiful, amazing layout of the Windows 11. What's new with the taskbar on the Windows 11? You can see here the taskbar on the Windows 11 with the new layout. What happened to Action Center on the Windows 11? Action Center is no longer a thing on the Windows 11. Windows 11 में Action Center available नहीं है. Instead, the experience has been replaced with Notification Center and Quick Setting. Action Center की जगह पर Notification Center and Quick Setting को replace किया गया है. So see here. What's new with widgets on the Windows 11? See here the layout of the different widgets on the Windows 11. What's new with the lock screen on the Windows 11? How it will look like? You see here look of the lock screen. What's new with wSL on Windows 11? The Windows subsystem for Linux wSL is getting a lot of improvement on Windows 11. For instance, Microsoft simplifies installation and update from multiple steps to a single command in this new version, including wsl install for setup and wsl update to update the platform. लिनक्स सिस्टम की तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज के सेटअप के लिए सिंपल कमांड्स यूज की है इंस्टॉलेशन और अपडेट के लिए. इंस्टॉलेशन के लिए वो यूज करते हैं फंक्शन wsl install और फॉर सेटअप एंड अपडेट के लिए wsl update. So you see here the layout of the wsl. What's new with the Microsoft Store on Windows 11? After upgrading to Windows 11, you find a new version of Microsoft Store app. The new app has been redesigned to a new interface to see to match the style of Windows 11, and there are a lot of improvements to help users and also make it easier for the users to find and download the apps, games, videos, and all other programs. So you see how look of the Microsoft apps. Are there any multitasking improvement on the Windows 11? Yes, of course, absolutely. Bilkul. Windows 11 comes with a several multitasking improvements, such as snap layouts and snap groups, desktops, multiple display improvements. You may see here that multiple displays at a time available on your screen on your desktop. You can simultaneously work on multiple programs. आप इसमें एट ए टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर अगर एक पोर्शन पर एक प्रोग्राम आपका एक्सप्लोरर ओपन है तो आप दूसरे पोर्शन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई एडिटर वीडियो एडिटिंग का या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसमें ओपन कर सकते हैं. तो इसमें ये आपको डिफरेंट मल्टीटास्किंग के लेआउट शो करता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं इनमें से. Does Windows 11 come with a new version of File Explorer?
Yes, Windows 11 comes with a new version of the File Explorer. But new version of File Explorer include an updated design, but it is retain much of the same look and feel of legacy version. ये एक्सप्लोरर वर्जन आपको बिल्कुल ओल्ड वर्जन की तरह ही नजर आता है। इसमें कुछ जो है ना चेंजेस की गई हैं लेआउट की, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। यू में सी है द लेआउट दी एक्सप्लोरर विंडो। What's the new with settings on the Windows 11? Windows 11 comes with a new version of the settings app that include a modern design that follows the visuals of Windows 11 with corners, colorful icons, semi-transparent materials and more. Windows 11 का जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स की विंडो है, उसमें उन्होंने बहुत सी डिजाइन और लेआउट की तब्दीली की है। इसके कॉर्नर चेंज किए हैं, आइकन को कलरफुल कर दिया है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज किया है। यू में सी है द लेआउट ऑफ द सिस्टम। What's new with the touch keyboard on the Windows 11? The touch keyboard is getting a lot of improvements. On Windows 11, you can customize the various aspects of software keyboard for touch-enabled devices. For example, you can change it with color with various themes, or you can create a custom color scheme. You can also change the keyboard size. You also change the keyboard size of keys, and you also change the many other options in the touch keyboard. What's new with the chat from Microsoft Team app on the Windows 11? See here the layout of the chat window. Does Windows 11 have any problem? Yes. According to Microsoft, there are several known issues in this initial rollout of Windows 11, but nothing widespread that could force the company to halt the rollout. जी हाँ, बिल्कुल अभी इनिशियली विंडोज 11 में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट सॉर्ट आउट कर रही है। However, the software maker is placing an upgrade hold for the affected device until the problems are resolved. And also, there are a lot of there are some requirements for the Windows 11. Your system must meet the requirements. विंडोज 11 की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। किसी भी सिस्टम पर अगर विंडोज 11 इंस्टॉल करना है या अपग्रेड करना है तो उन रिक्वायरमेंट्स को लाजमी कंप्लीट करना है। So when you update or install the Windows 11, you may see here this PC does not currently meet the Windows 11 system requirements. What is the reason why this PC does not currently meet the Windows 11 system requirements? The reason are system disk needs to be 64 GB or longer. It means that your system disk must be 64 GB or longer space available. And second one is the PC must support the TPM 2.0 version. If your system not support the TPM 2.0 version, you cannot install or upgrade the Windows 11. One another feature that is also secure boot option that must be enabled. If your secure boot option is not enabled, then you cannot install or upgrade the Windows 11. So these are the main Windows 11 system requirements. You must complete these requirements to install the Windows 11. Thank you for watching this video. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज में हम कुछ और भी अपडेट्स ऐड करेंगे, न्यू वीडियोस ऐड करेंगे जो विंडोज 11 से रिलेटेड होंगी। So keep watching these videos and subscribe our channel. Thank you very much.